फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल नज़द मोहम्मदी चौक जिलानाबाद MSK मिल्स गुलबर्गा में साइंस एग्जीबिशन का शानदार इनेकाद अमल में आया। स्कूल के मरहूम बानी मुमताज़ व मारूफ शायर जनाब सईद आरिफ की अहलिया मोहतरमा रियाज अफशा ने साइंस एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल में पिछले 4 सालों से साइंस एग्जीबिशन का कामयाब इनेकाद अमल में आ रहा है। इस बार साइंस एग्जीबिशन में 134 मॉडल्स शामिल किए गए हैं। फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस बार जो साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया वो इस हैसियत से मुनफरिद था कि मॉडल्स के ज़रिए इस्लामी अखलाकी पैगाम देने के अलावा उर्दू की फ़िक्री शायरी और गुलबर्गा शहर के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की कामयाब तर्जुमानी की गई। साइंस और सोशल साइंस के मुख्तलिफ मौज़ूआत टॉपिक्स पर बेहतरीन मॉडल्स बनाए गए थे। तलबा व तालिबात ने नहायत खुद एतमादी कॉन्फिडेंस के साथ अपने अपने मॉडल का तारुफ करवाया। फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बावजूद उर्दू, कन्नड़ा, अरबी और हिंदी ज़बानों में मॉडल्स तलबा व तालिबात ने पेश किए और इनका उर्दू, कन्नड़ा, हिंदी, अरबी ज़बानों में बेहतरीन तारुफ करवाया। अब बिलखुसूस तालिबात ने अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब और सईद आरिफ के अशार सुनाते हुए उनकी बेहतरीन तशरीह की। फॉर्चून स्कूल के डायरेक्टर ज़हीर शेख, चेयरमैन सईद आरिफ फाउंडेशन गुलबर्गा की दुख्तर शाजिया फातिमा और हाफिज़ा का तैयार किया हुआ ए ड्रीम ऑफ कलबुर्गी मॉडल फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल की साइंस एग्जीबिशन में मरकज़ निगाह बना रहा। इस मॉडल में शहरियान गुलबर्गा के लिए सरदर्द बने शहर के ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए फ्लाई ओवर्स और अंडरपास ब्रिजेस बनाकर गुलबर्गा के मुंतखबा नुमाइंदों को ये पैगाम दिया गया कि गुलबर्गा की सड़कों को कुशादा करते हुए अंडरपास वे और फ्लाई ओवर्स तामीर करते हुए ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाए। इस मॉडल को वालिदैन और दीगर ने बेहद पसंद किया। दूसरा मॉडल जो सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ था वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह और श्री शरण बसवेश्वर का मंदिर। इसके ज़रिए गुलबर्गा के सदियों पुराने भाईचारे की बेहतरीन तर्जुमानी की गई। MLA गुलबर्गा जनूब अलम प्रभु पाटिल के अलावा महकमा तालीमात के ओहदेदारान, कई स्कूल्स के टीचर्स और HMs, प्रिंसिपल्स, सोशल वर्कर्स के अलावा औलियाए तलबा की कसीर तादाद ने साइंस एग्जीबिशन का मुशाहिदा किया और बेहतरीन मॉडल्स तैयार करने पर स्कूल मैनेजमेंट की खूब सताइश की। डॉक्टर ज़हीर आरिफ, डायरेक्टर फॉर्चून स्कूल की खुसूसी दिलचस्पी नायब चेयरमैन और प्रिंसिपल फॉर्चून स्कूल मोहतरमा नाज़िमा जबीन की निगरानी में टीचर्स और स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स ने सिर्फ 15 दिन की सख्त मेहनत से बेहतरीन मॉडल्स तैयार किए। फिर साइंस एग्जीबिशन के अलावा फन फेयर भी मुनक्किद किया गया जिसमें तलबा और तालिबात ने जायकेदार खानों के स्टॉल्स लगाए और गेम्स का भी मुजाहरा किया। अयान शेख, जनरल सेक्रेटरी फॉर्चून इंग्लिश मीडियम स्कूल ने महकमा पुलिस, महकमा तालीमात और पेरेंट्स के ताउन उनका शुक्रिया अदा किया। Myself, Mohammada, we are UKG student, young one of animal and bird and their homes. A dog is a bird that lives in a pond here, and dog like is called a dog is a pet animal. Dog lives in a kennel, dog is our house. The young one of is called baby. Thank you. Myself, I am Fatima. The dog gave us milk on me in a shed of nafkas by cow. Horse is a domestic animal. Horse live in a stable. Horse is a strong animal.
Myself, Azad Khan, goat. A goat is a domestic animal. The owner of goat is a kid. The shelter of goat is called a shed. A goat lives in a shed and gives us milk. Myself, Abinza of class UKG. Hi sir, can you guess my project, sir? It's okay sir, I will explain. This is used for to do simple addition. This will help you get from 0 to 10. Let's see how it works. I am sliding the board panel to select the number, and same will be visible like this. 7 plus 1 equal to 8, 6 plus 2 equal to 8, 5 plus 3 equal to 8, 4 plus 4 equal to 8. Let's look another number. Sir, would you like to say any number? 8 plus 1 equal to 9, 7 plus 2 equal to 9, 6 plus 3 equal to 9, 5 plus 4 equal to 9, 4 plus 5 equal to 9. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Alubna Taras from class 7th B. Myself, Afza Sheikh from class 7th B. Myself, Khansa Fatima from class 7th. Our topic is मनासिके हज. हज इस्लाम का 5वां फर्ज है. मनासिके हज में कई इबादतें और रस्में होती हैं. हज के दौरान मुसलमान काबे का तवाफ करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान सई करते हैं, अरफात में खुदा से माफी मांगते हैं, मीना और मुजदलिफा में इबादत और कुर्बानी करते हैं. हज के कई अरकान हैं. नंबर 1 काबे का तवाफ करना. नंबर 2 सफा और मरवा के दरमियान सई यानी दौड़ लगाना. मुजदलिफा में कुर्बानी करना. अरफात में खुदा से माफी मांगना. मीना में इबादत करना. ये है रमी यानी कंकड़ियां मारना. शैतान को कंकड़ियां मारना है. इससे हज पूरा मुकम्मल होता है. ये ना मारे तो हज मुकम्मल नहीं होगा. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम नसीरुद्दीन है और मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. सूरह अल फील हमें अल्लाह की कुदरत याद दिलाता है. इस सूरह में असहाब फील का वाक़या बयान. अब्राहा नामी बादशाह काबे को गिराने का इरादा किया था. अब्राहा नामी बादशाह हाथियों के साथ काबा गिराने आया तो अल्लाह ने अबाबिल परिंदे भेजे जो अपने साथ छोटे कंकर लेकर आए और पूरा लश्कर तबाह हो गया. अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है. अल्लाह अपने घर की हिफाजत करता है. गुरूर और जुल्म का अंजाम बुरा होता है. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम महविश अंजुमा. मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ. माय टॉपिक इज 5 पिलर ऑफ इस्लाम. कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज. कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. नमाज, रोज़ाना 5 वक्त अल्लाह की इबादत करना. ज़कात, अपने माल का एक हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देना. हज, जिंदगी में एक मर्तबा मक्के का सफ़र करना अगर सेहत और पैसा इजाज़त दे. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम तहरीम नाज़िम है. 5th क्लास में पढ़ती हूँ. मेरा टॉपिक खाना खाने की सुन्नतें हैं. खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना. खाना खाने की शुरुआत में बिस्मिल्लाह कह कर शुरू करना. जमीन पर बैठकर खाना बेहतर है. सीधे हाथ से खाना चाहिए. अपने सामने से और 3 उंगलियों के साथ खाना चाहिए. खाने में नुक्स या कमी नहीं निकालना. खाना खाने के बाद उंगली और बर्तन को साफ करना. खाना खाने के बाद जज़ाकल्लाह खैरा. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Tuba Mahwish from class 7th B. My topic is Khabar ka azab barhaq. Minha khalaqakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum khalaqa ukhra. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, उसी में लौटेंगे और फिर दोबारा निकालेंगे. हदीस का मफहूम है कि इंसान के मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ रहते हैं: माल, आमाल, रिश्तेदार. माल घर तक यानी उसके माल की तकसीम की फिक्र लोग करेंगे. रिश्तेदार यानी कोई भी कितना भी चाहने वाला हो उसका अजाब ना कम करेंगे ना उसे साथ भेजा जाएगा. कब्र की रात सबसे मुश्किल रात होती है और बुरे अमाल खौफनाक सांप और बिच्छू की शक्ल में इख्तियार करेंगे. कंटिन्यू मुसलसल उस पर अजाब होगा क़यामत तक. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद सैन अली है. मैं क्लास 6th A में पढ़ता हूँ. मेरा टॉपिक जन्नत के 8 दरवाजे हैं. बाबल सलात नमाज वालों के लिए, बाबल सदका और खैरत देने वालों के लिए, बाबल काज़िमीनुल गैज़ गुस्सा पीने वाले और माफ़ करने वालों के लिए, बाबल जिहाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए, बाबल रयान रोज़ेदारों के लिए, बाबल हज करने वालों के लिए, बाबल ईमान वालों के लिए, बाबल ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र और इल्म के लिए, जन्नत में दाखिल होते की दुआ. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्नह. जज़ाकल्लाह. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम फरहान है और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ. मेरे मॉडल का नाम जहन्नम के 7 दरवाजे. जहन्नम गुनहगार और नाफरमान लोगों के लिए, सकर नमाज छोड़ने और गरीबों का ख्याल ना रखने वालों के लिए,
लदासत से मुंह फेरने और तकब्बुर करने वालों के लिए, हुतमात चुगली बुराई और माल का घमंड करने वालों के लिए, सईर जिद्दी और अल्लाह के हुक्मों को झुठलाने वालों के लिए, जहीम गुनाहों में हद से बढ़ने वालों के लिए, हाविया सख्तरीन अजाब मुनाफिकों और सबसे बदतरीन लोगों के लिए, जहन्नम से पनाह मांगने की दुआ, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन्नार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुश्ता फिरदौस है। मैं हफ्तम क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा उन्वान सफ़ा और मरवा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, वो अल्लाह के नबी थे। आपकी बीवी का नाम हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम था और आपके लड़के का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को जो शक्कू थे उनको सहरा में छोड़ा। वो ऐसा सहरा तो ना खाने के लिए कोई चीज़ थी और ना को पीने के लिए पानी। जब आप इनको छोड़े तो इनके हवाले एक थैली खजूर और एक मुश्त पानी इनके हवाले कर दिया। थोड़े ही दिनों में खजूर और पानी का जखीरा खत्म हो गया। बीबी हाजरा तो बर्दाश्त कर लेती, मगर मासूम सा एक बच्चा शेखू कैसे बर्दाश्त करता। भूख की प्यास से बचा रोने लगा और रंग सरने लगा। माँ बेकरार हो गई, पहाड़ी की चुंडी पर चढ़ कर देखने लगा। अगर कोई नजर आए तो उससे मदद ली जाए। वहाँ पर दो पहाड़ियाँ थी, एक का नाम सफा, एक का नाम मरवा। कभी इस पहाड़ी पर जाती तो कभी उस पहाड़ी पर जाती। इस तरह उन्होंने 7 चक्कर लगाए। साथ में डर भी लगा हुआ था कोई जानवर बच्चे को अकेला पाकर उठा ना ले जाए। जब थक कर बच्चे के पास पहुंची तो वहाँ देखा कि साफ और शफाफ पानी का चश्मा उबल रहा है। इसी वक्त बीबी हाजरा ने पानी को हाथ लगा कहा, जमजम। जमजम के माने रुक रुक के। इसी वक्त इसके अतरफ पत्थर लगा दिए। ये वही चश्मा जिसे हम आबे जमजम कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अज़ीबा नशरा है। मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मेरा टॉपिक है वालिदैन की खिदमत। वालिदैन का एहतराम करना फ़र्ज़ है। उनसे नरमी और आदाब से बात करनी चाहिए। उनकी बात माना और उन्हें तकलीफ़ ना देना। उनकी खिदमत दिल से और खुशी से करनी चाहिए। उनके लिए हमेशा दुआ करनी चाहिए। बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना बहुत बड़ी नेकी है। वालिदैन की खुशी अल्लाह की खुशी का ज़रिया है। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Zoha Tahura of class 9B. Our model name is Changes of Qibla. Qibla means the direction Muslims face while offering Quran Salah. In the beginning of Islam, Muslims used to pray facing Masjid al-Aqsa in Jerusalem. Later, Allah commanded Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to change the Qibla towards the Kaaba in Makkah. This commandment is mentioned in the Quran, Surah Al-Baqarah. From that day onwards, all Muslims used to pray facing the Kaaba. Jazakallah. Assalamu alaikum. Myself Adiba from class 8B. Our topic is Ghazwa Khandaq. ग़ज़वा खंदक इस्लाम की एक अहम जंग है। ये जंग मदीने के करीब लड़ी गई थी। इस जंग में मुसलमानों ने खंदक खोदी थी। खंदक का मशवरा हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला ने दिया था। दुश्मन लश्कर पार नहीं कर सके। अल्लाह की मदद से मुसलमान कामयाब हो गए। इस जंग को बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहते हैं। दीन की दावत को रोकने के लिए मुशरिकीन ने मक्का ने कई कोशिशें और जंगें की, पर वो सहाबा के ईमान के आगे बेकार गए और शिकस्त का सामना करना पड़ा। तब मुशरिकीन मक्का के अतराफ जितने भी मुमालिक जो दीन के खिलाफ थे उन्हें इकट्ठा किया ताकि दीन और मुसलमानों और मदीने को जड़ से ख़त्म कर दे। सारे एक साथ हमला करेंगे तो मुसलमान मुकाबला कर ना सकेंगे। इस नापाक इरादों के साथ 10,000 का लश्कर जंगे साज और सामान के साथ मदीने की तरफ निकले। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Huzaifa Nimra from class 8th standard. My model name is Ramzanul Kareem. रमज़ानुल करीम इस्लाम का बहुत मुबारक महीना है। रमज़ान की शुरुआत चाँद देखने से होती है। सहर खाना सुन्नत है, सहर में बरकत रखी गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सलामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं तुमसे पहले, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इफ्तारी के वक्त दुआ कबूल होती है। डूज एंड डोस्ट, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचा जाए। नमाज, कुरान, नेकियों का एहतराम करें। ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। लैलतुल क़द्र जो 1000 रातों से अफजल है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बयनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल की गई, जो लोगों के लिए हिदायत है। रोज़े पूरे होने की खुशी में ईद मनाते हैं। जन्नत में रैयान नामी दरवाज़ा है क़यामत के दिन, जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होते हैं। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Afia from class 7B. My topic is Masjid Quba. Masjid Quba मदीना में है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी
بنیاد رکھی. مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. مسجد قباء کی عبادت کی ایک عمرہ کرنے کا ثواب ہے. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. بے شک وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم کی گئی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو، نماز ادا کرو. اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء نامی جگہ پر قیام کرے اور علی رضی اللہ تعالیٰ جو امانتیں لوٹانے کے لیے مکہ میں رکے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گزر بسر کے سامان کی طرف کوئی توجہ نہ دی سوائے نماز کے. اسی فکر میں قباء نامی مسجد کی بنیاد رکھی اور خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف اقصا نساء اینڈ دیز آر مائی فرینڈس. شیز نیم از فریا اینڈ شیز نیم از مہر الناس. چاند کے دو ٹکڑے ہونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. یہ معجزہ اللہ کے حکم سے ہوا. لوگوں نے چاند کو 2 حصوں میں دیکھا. یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا. اس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا اشارہ کیا تھا. اس معجزے کو اسلام میں ایک اہم واقعہ مانا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایمن ہے اور میں 10ویں جماعت کی طالبات ہوں. میرا موضوع ہے مرزا غالب. مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ تھا. ان کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام عزت النساء تھا. ان کی پیدائش ہوئی تھی 27 دسمبر 1997 کو. ان کی پیدائش ہوئی تھی آگرہ میں. ان کے چاچا نے ان کو پالا. بعد میں ان کے چاچا بھی فوت ہو گئے تھے. مرزا غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی. نواب خان احمد بخش کے چھوٹے بھائی الہی بخش کے بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی تھی. مرزا غالب اردو اور فارسی کے عظیم ترین شاعروں میں سے ایک تھے. مرزا غالب عظیم ترین شاعروں میں سے ایک تھے. مرزا غالب اردو ادب کے ان شاعروں میں سے ایک تھے کیونکہ انہیں سب لوگ پہچانتے ہیں. ان کی ایک بہت فیمس شاعری ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کی خواہشیں بہت ہوتی ہے. وہ مر بھی جاتے ہیں لیکن ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Zikriya Fatima, studying in 10th standard. I'm giving a brief introduction about our Shair late Saeed Arif sir. Late Saeed Arif sir, founder of Fortune School. This model is dedicated to a loving memory of late Saeed Arif sir, founder of Fortune School. He was an educationist and a poet, شعر اور شاعری میں ماہر and he had a deep love for خوبصورت نعت رسول. He was born on 19 November 1939 in Umarga, Maharashtra. Since childhood, he was interested in writing Naat Rasool and Sher or Shairis. His writing reflects to humanity, unity, and inner values. Some shairis were motivational, like بات ہندو نہ مسلمان کی ہے اب ضرورت یہاں انسان کی ہے. ہم زمانے میں رہے مل جل کر یہی آواز ہندوستان کی ہے. Some shairis inspire us to develop inner quality, beauty and inspiration for all of students and all people. Like حسن اپنی نظر میں پیدا کر, درد دل جگر میں پیدا کر, جس کی تعریف ہو زمانے میں ایسی خوبی ہنر میں پیدا کر. He wrote many beautiful naats on Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and which shows deep love, devotion, faith, and it's expressed the spiritual depth and pure connection with Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alayhi wa sallam. One of the naat is اب در پہ مجھے آپ کے سرکار بلا لو, میں کب سے مدینے کی طرف دیکھ رہا ہوں. After his passing, a new book titled Sham-e-Rahmat was compiled by his earlier works by collecting naat from his earlier works, and the official opening is still pending. He passed away on 15th July 2023, but his share and naat values are continue to live on. After his passing and after it,
Foundation, children are being provided and guided by the HIFZ education, and also this foundation supports to children, unprivileged children, for half fee concessions. This model is a humble tribute to a poet whose words spread faith, unity, humanity, and goodness. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Soleha and she is my friend. Her name is Zunaira Dashkin. آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال، جو کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال کا پورا نام محمد اقبال تھا، اور ان کے والد کا نام شیخ نور محمد، اور والدہ کا نام امام بی بی، اور دادا کا نام شیخ محمد رفیق تھا. علامہ اقبال آپ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم نے بہت اچھے سے حاصل کی. علامہ اقبال کا پورا نام علامہ اقبال ایک ہمارے عظیم قومی شاعر ہیں. علامہ اقبال کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا ہے. علامہ اقبال کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ آزادی پیدا کیے. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتے ہیں ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. علامہ اقبال کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. اقبال کی شاعری میں خودی، سیلف ریسپیکٹ، ایمان، علم، امت کی بیداری اور جوانی کا جذبہ بہت ہوتا تھا. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. انسان کی بڑی سوچ انسان کو بڑا بناتی ہے. سیدہ صفیہ انجمن، میں 6ٹھی کक्षा کی چھاتر ہوں. میرا وشے ہے سنت کبیر داس. جنم سن 1398 عیسوی، جنم ستان کاشی، پتا کا نام نیرو، ماتا کا نام نیما. رچنائیں ساکھی سبد ایوم رامائنی. چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ روئے، 2 پاٹھن کے بیچ میں ثبوت بچانا کوئی. ارتھ چلتی چکی کو دیکھ کر کبیر داس جی کے آنسو نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چکی کے 2 پٹوں کے بیچ میں کچھ ثبوت نہیں بچتا. جو ویکتی 2 لوگوں کے بیچ پھنس جاتا ہے یا 2 کام ایک ساتھ کرتا ہے، اس کی بھی ایسے ہی حالت ہوتی ہے. بڑا بھیا تو کیا بھیا، جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پر لگے اتی دور. ارتھ کھجور کا پیڑ بے شک بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن نہ تو وہ کسی کو چھایا دیتا ہے اور پھل بھی بہت دور اونچائی پر لگتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کسی کا بھلا کر نہیں پا رہے تو ایسے بڑے ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دھیرے دھیرے رے مانا دھیرے سب کچھ ہویا، مالی سینچے 100 گھڑا ردو آیا پل ہویا. دنیا کا ہر کام دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے، اس لیے صبر کرو. جیسے مالی چاہے کتنے بھی پانی سے باغیچے کو سینچ لے، لیکن سمے آنے پر ہی پھول کھلتے ہیں. دھنیہ واد. Good morning, sir. My name is Salina Mehra. They are my friend Bushra and Afia. We are the students of class 4. This is my model of Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is India's 3rd mission to the moon. The word Chandrayaan comes from Sanskrit, where Chandra means moon and Yaan means vehicle. So it is literally a moon vehicle. It was launched by ISRO on August 23, 2023. India became the first country in the world to land near the moon South Pole. This is a very cold and dark place. There are 3 main parts of the model. The propulsion module, this was the taxi of the mission. It carried the lander all the way from Earth to the moon's orbit. Vikram, the lander, named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of Indian space. This part had 4 legs, land gently on the dusty moon surface. Pragyan, the rover, this is a small 6-wheeled robot that lived inside the lander. After landing, it rolled out to explore and study the moon soil and also look for water and minerals in the soil. It was launched using a powerful rocket called LVM-3, also known as Bahubali. The spot where Vikram landed is officially named Shiv Shakti Point. It failed the primary missions after one lunar days, about 14 days, and our now longest operation. This mission was a great success. Myself Ghulam Rasool from class 5th. Today my topic is layer of soil. This is my model of layer of soil. Humans. This is the top layer. It is made of dead plants and animals. It helps plants to grow. Topsoil. Plants grow in this layer. Roots are found here. It has nutrients. Subsoil. This layer has less nutrients. Parent rock. This layer has small rock. Bedrock. This is the last layer. It is very hard layer of soil for important plants. Gives food. Soil gives food to stores water, help us grow crops. Thank you for listening.
Good afternoon, everyone. Myself Sayyid Shaista from class 7B. Today we are representing the project is wastewater treatment. This model shows how dirty wastewater from homes and factories. It can reduce first large waste like plastic and stone. It removed by screening, next it and settle down in the great chamber. Then in the sedimentation tank, heavy solid settle as sewage. After that, water passes through filter like sand, gravel and charcoal to remove small impurities. Finally, clean water is obtained that we can reduce for gardening and release safely into river. Then wastewater treatment is very important because it saves water from environment and disease prevent reduce for water pollution. Thank you. Myself Umar Abdullah of class 6th. These are my partners Sheikh Noorez and Muzammil Ali. This is our model, water cycle working model. Water cycle. The water cycle is the continuous movement of water on the earth. Evaporation. When the sun heats in rivers, lakes and ocean, water changes into water vapor and goes into the air is known as evaporation. Water cycle is important because it provides fresh water to all living things. It helps to growing crops, recycles water naturally. Thank you for listening us. Everyone, myself Mohammad Zain Patel from class 6th. My topic is drip irrigation. Drip irrigation is a modern method of watering plants. In this system, water is supplied slowly drop by drop to the roots of plants. In this model, you can see a water container connected to small pipe. When water flows through this pipe, it come out as small drops near the plant root. It helps plants to get exact amount of water they need. Advantages of drip irrigation: it saves water and it saves water. Plants grow healthy. It is very useful in dry water areas. It also saves time and effort of farmers. Myself Mohammad Sabir from class 7th. My topic is parts of a flower. This is my 3D model of a flower. Flower is a reproduced part of the plant. It is a help to make seeds and new plant. This is a petals. These are the colorful part of the flower. They attract insect like bee and butterfly for pollination. This is a sepulchre. These are the green part at the bottom. They protect the flower when it is in the bud stage. This is a stem male president. The stem is the male part of a flower. Stem male president. The stem is the male part of a flower. It has two parts. First part, another produce pollen grain. Second part, the filament hold the third. Pistil female part. The pistil is the female part of the flower. It has three parts. First part, stomata sticky part. They receive pollen. Style help pollen reach the ovary. Fertilization. When pollen reach the ovary through the pollen to fertilization occur after fertilization. Ovule becomes seed, ovary becomes fruit, consolation. All part of a flower work together to help the plant reproduce and grow. Thank you. Good afternoon, sir. Myself Mohammad Ashraf from class 5A. Today's my topic, layers of Earth atmosphere. This is a model of the layers of the atmosphere. The atmosphere is a blanket of air around the Earth. There are pilot troposphere. This is a low layer. We live in this layer. Weather like rain, clouds, and winds happening here. Stratosphere. It has the ozone layer. The ozone layer protects us from the sun's harmful rays. Airplane fly in this layer. Mesosphere. This is the coldest layer. Meteor burns up in this layer but are reaching the earth. Thermosphere. This layer is very hot, light and precipitation are found here. My name is Shaista and they are my friend Alana and Myra Afshin. We are the students of class 4. Today we are going to look at two different times of the ancient world and the modern world. The ancient world, handmade era, the ancient period thousands of years ago. This was a time when humans were learning how to build the every first city and invention. In this era, people worked on food, rode horses or used wooden boats with sails. There were no engine. In ancient world, writing was done on stone, clay or papyrus. Messages were carried by hand and took weeks to arrive. People used candles or oil lamps for lights. They cooked over open fires and wore clothes made by hand and wool, linen and animal skin. The next period is the modern world, the past era. The modern period is the time we live right now. It started a few hundred years ago when people invented powerful machines and electricity. We use cars, high-speed trains and airplanes to travel across the world in just few hours. We have
We have the internet, smartphone and computer. You can send a message to someone in another country in less than a second. Today we have electricity for lights, refrigerator to keep food fresh and oven to cook quickly. Most of our clothes are made in big factories. We can eat fruits and vegetables from all over the world at any time of year. If we got sick, we have vaccines to prevent disease and powerful medicines like antibiotics to get well. Madam, my name is Zulekha Begum and she is my friend Mahrana. We are the students of class 4. Today we are going to look at two different times, the ancient world and the modern world. The ancient world and the modern. The ancient world and the handmade era. The ancient periods happened thousands of years ago. This was the time when humans were learning how to build. The very facility is an invention. In this era, people walked on foot, rode horses, or used wooden boats, which sailed. There were no engines. Writing was done on stone, clay, or papyrus. Messages were carried by hand and took to week to write. People used candle or oil lamp for light. They cooked over open fires and wore clothes made by hand from wool, lining, or animal skin. Now I am going to tell you about the modern world, the past era. The modern period is the time we live in right now. It started a few hundred years ago when people invented powerful machines and electricity. We use cars, high-speed trains and airplanes to travel across the world in just a few hours. We have the internet, smartphones and computers. You can send messages to someone in another country in less than a second. We have the electricity for lights, refrigerators to keep food fresh, and ovens to cook quickly. Most of our clothes are made in big factories. We can eat fruits and vegetables from all over the world at any time of year. If we get sick, we have vaccine to prevent disease, like antibiotics to get well. Thank you for listening. My name is Nida Tarin. She is my friend Umama Fatima. We are from 4th standard. Our model name is Fortune School. Today we are representing our school only. Fortune School is located in Galip Colony, Mohammadi Chowk, MSK Mill, Kalburgi, Karnataka. The idea of building a school had first come into the mind of our managing director of our school and later the foundation be laid by our former president, Sir, late Janab Alhaj Sayyid Arif Saab on 10 February 2005. Our school comes under Parvez Education and Welfare Trust, where Mrs. Riaz Afshan is the president, Owais Sheikh Sir is the vice president, Dr. Zahir Sheikh Sir is the managing director, Ayan Sheikh Sir is the general secretary, and Mrs. Nazima Jabin is the principal madam of our school. They are the management team who works day and night for upliftment of the school. Fortune School is a 4-storied building. It has 25 space rooms, well-equipped infrastructure, good administration by following rules and regulations and maintaining discipline in the school. Our school provides clean and healthy environment with good quality of education. Healthy competitions are held every year, which include sports, debate, seminar, art, quiz, science exhibition, etc., which showcase the talent of our students and make them to shine and progress in their career. Our school has also provided with namaz room for offering namaz and also include abacus Arabic classes for girls under the guidance of scholars. Management team always inspire and motivate us with their motivational thoughts. Support us in our studies. Our school has completed 20 years and get running successfully in the grace of Almighty Allah. We are fortunate to be the part of this institution. Thank you, sir. I am Mohammad Mudassir. They are my colleagues Umar and Ayan. We are the students of Fortune English Medium School, studying in class 4th. We are representing the model of renewable resource. Hello, my project is about renewable energy. It is a natural resource like sun, wind, and water. They refuse things service like magic pot that never goes empty. Wind energy power from the wind energy power from moving air. In my model, the wind spin turbine is turn a motor inside which generates to catch sunlight and turn it directly into electricity. Hydropower, power from water. Moving water in rivers or from dam is used to spin turbine. It is connectivity the most widely used renewable resource of making electricity.
Honorable judges, I am Mohammed Junaid from class 7th B in Fortune English Medium School. So today I am going to explain about carbon purification model. This model shows how harmful smoke coming out of factories can be cleaned before releasing into the air using a carbon absorber system. Factory release smoke that contains carbon dioxide, harmful gases, these gases causes air pollution, global warming. Working. Factory section. This part represents a factory where fuel is burned. Smoke is produced inside the factory. Chimney and pipe. The smoke moves out through the chimney and enters the pipe. Instead of going directly into the air, it is sent to the purifier. Carbon absorber. This box contains activated carbon. Activated carbon absorbs harmful gases and smoke particles. It traps toxic substance. Clean air outlet. After purification, clean air comes out from the outlet pipe. This air is much safer for environment. Importance. This model shows that industrial pollution can be reduced if we use proper purification system. If factory use carbon absorber, we can get cleaner air and healthier environment. Thank you. My name is Mohammad Azran from class 6B. This is my friend Asad Khan and this is my friend Abdul Rahman. My topic is rainwater harvesting model. This model shows rainwater is collected, filtered, stored and refused. Rain and cloud. The cloud at the top shows rainfall. Rainwater falls on the house roof and open land. House. Rainwater falling on the roof of the house is collected. Pipes carry the water downward instead of leaking and it flow away. Filter plant. The water first goes to the filter plant. The filter plant removes dust and leaves. After filtration, the water flows into the well. This helps to recharge groundwater. Excess rainwater is stored in the lake. The lake can be used for plants and animals. Stored water is used for irrigation. Farms crops grow well when there is less rainfall. Rainwater from road and open land is dedicated to the lake or well. Conclusion. This model shows that rainwater harvesting is a smart way to save water and we can use it in the future to save water and our environment. Thank you. Good morning. Myself Zainab Tamkin from class 5th. This is my agriculture working model. It shows how farming animals, forests and greenhouse are all connected. Cultivation land. This part shows farmland where crops like wheat, rice and vegetables are grown. Greenhouse. This is a greenhouse. It is made of transparent plastic. Inside the greenhouse, plants get more heat and light, so they grow faster and better. Animal section. Here we have animals like cows, zebras. Animal give us milk, eggs and manure. Forest area. This is a forest area. Trees give us oxygen, fruit, wood and help bring rain. This model shows the agriculture depend on nature. Thank you. Myself Shaza Fatima and she is my colleague Hafiza. We are from 9th standard. Our model is my dream Kalburgi. This is my model, our dream Kalburgi. In the future, Kalburgi will become a well-planned, smart and green city. To reduce traffic, there will be 4 satellite bus stands located on Major Ring Road, Alan Road Satellite Bus Stand, Sedam Road Satellite Bus Stand, Afzalpur Road Satellite Bus Stand, Jawargi Road Satellite Bus Stand. This bus stand will make transportation easy for people from surrounding areas. Kalburgi is known as the education hub. It has many education institutions, Central University, Appa University, KBN University, and many famous colleges like KCT Engineering College, Appa Engineering College, Shetty Engineering College, SBR College, and famous degree colleges and government colleges like Government Medical College, KBN Medical College, HK Society, ESIC Medical College, MRMC Medical College. In my dream Kalburgi, more flyovers will be constructed at busy junction. These flyovers will reduce traffic jam, save travels of time, and control air pollution. They will help ambulance, school buses, and emergency vehicles move smoothly. Well-planned flyovers will make transportation easy for people from surrounding areas. Next, my friend will continue. Kalburgi already has an operational airport which improves connectivity and will be expanded in the future. Kalburgi is rich in culture and harmony. Famous places like SB Temple, KBN Dargah represent unity and many visitors and devotees. Clean and green Kalburgi. My dream is plastic free with proper waste management. Green and beds are developed around monuments and institutions. Smart transport and infrastructure. Wide roads, footpaths and electric buses and cycle tracks. Solar power street lights. Water and environment management. Rainwater harvesting. Clean lake and drainage system,
safety and health employment, CCTV cameras and health women safety measures, IT parks and employment will be developed in my future dream city, Kalburgi. My dream city is heritage and education and harmony grow together by protecting monuments like SB Temple, Kedian Dargah, stretching unit streets, and Kalburgi can become a role model city in my future. Thank you for giving me. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೇಖರ್ ಖಾನ್. ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಟಾಪ್ 10 largest districts in Karnataka and historical places. Number 1 Belagavi 13,415 chadara kilometer. Number 2 Gulbarga 10,915 chadara kilometer. Number 3 Tumkur 10,597 chadara kilometer. Number 4 Bijapur 10,498 chadara kilometer. Number 5 Uttar Kannada 10,291 chadara kilometer. Number 6 Shivamogga 8,477 chadara kilometer. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ. ನನ್ನ ಸೇರೋನಾಭಿಯಾಯ. ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟವೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Fatima, I am studying class 1st and my model is about agriculture. Agriculture means farming. Farmer grow food for us. This is a farmer. The farmer work very hard in the fields. The farmer plow the land, then he sows it in the soil. Plants need water, rain and sunlight to grow. From plants we get rice, wheat, fruits and vegetables from farm. Farmer give us food, we should respect farmer. Thank you. I am Muhammad Saqib Ali Jagidar, student of Fortune English Medium School, studying in class 2nd standard. Today we are representing the model of Radford. My model of Radford, which is in Delhi, the capital of India. The Radford was built by Mughal Emperor Shah Jahan a long time ago. It is called Radford because it is made up of red sandstone. The Radford is very big and beautiful. Afternoon, myself Adina and she is my friend Iram, Tehseen and Sayeda. We are from class 9th. Our model is solar power irrigation system. The demonstrating sustainable agriculture practices. This system uses solar energy to power water pumps, providing an environment friendly ways to water crops. Solar panel visible on the roof of the model house converts sunlight into electrical energy. Now my friend will continue. This electricity powers water, which draws the water from a source such as a well, reservoir and containable. In this model, we converted in white model. The pumped water is then transported through pipes and distributed to the fields. Often methods use drip irrigation to water the plants. Thank you. Next, my friend will continue. This system offers several advantages over traditional irrigation methods. It provides consistent for water supply in traditional irrigation methods, especially in remote areas, suitable for various traditional irrigation methods, including drip, sprinkler, and surface irrigation. Thank you. My friend will continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Couple system runs directly from without battery, pumping water during sunlight and the sun is shining. It stores solar energy in a battery to power pump during cloudy days or at a night. Thank you. My name is Syed Ahmed. I am studying in class 9th. I am going to explain you about my working model, energy efficient smart city. An energy efficient smart city is a city that saves energy by using smart technology. It uses renewable like solar and wind energy to produce electricity. Smart street lights and sensors so that electricity is not wasted. In this way, we can make a smart city. Thank you. My friend will continue. It is an innovative city using ICT, information and communication technology. It improves service and life quality. It enhances urban operations efficiency and competitiveness. Here we have intelligent transport system and traffic management. Thank you.
Good morning, I am Anas of class 9. Today I am going to explain you to about my exhibition model air pollution control system. Air pollution control system are scientific and engineering frameworks designed to mitigate, eliminate from pollution from industrial movement, waste industrial movement, technology. Intake polluted air smoke is down into a using system using fans, exhaust mechanism, small fans and blowers. My friends will continue. I am Akif from class 9th. Air pollution control involves technologies like electrostatistics, precipitators, fabric filters, other materials purpose to prevent toxic substance and from entering the environment. Air pollution control industrial uses smoke vehicles, uses electrostatistics, precipitators, carbon filters, scrubbers to remove particulates from other side. This is a smart dustbin. And first we drop and leave it. Drop. So drop. My name is Shekira Mehmet. I am student of class 9. I am going to explain you about my working model automatic street light. Traditional street lights are inefficient because they stay 100% bright all night, even when roads are empty. Sensor-based lighting creates a light on demand, the system that adjusts brightness based on real-time needs. Next, my friend will continue. Let me explain you what does it first. An LDR detects sunlight and keep the system off during the day. PIR detect heat from vehicle. The light is at a dim level to save energy but instantly 100% when someone is purchased. The benefits of the system are it reduces electricity consumption 60 to 80% when it also reduce light pollution. Thank you. Good morning everyone, I am Ali Murtaza, student of 9th standard. I am going to explain you about my small project for exhibition hydraulic bridge. A hydraulic bridge project demonstrates how fluid pressure lift over lower sections of a bridge for watercraft using Pascal's law, where confined fluid like water in syringe transmits equally to move pistons, creating a controllable, powerful lift for Pascal's lift bridge. Now my friend will continue. Pascal law, pressure applied to a fluid in a closed container is transmitted equally in all directions. Hydraulic cylinder, a pump pushes fluid water oil into a cylinder, moving a piston with significant force. Next, my friend will continue how it does work. Fill and connect syringes are filled with water or oil connected by tubing and air bubble remove. Apply for pushing the plunger on one side, pushes the fluid through the tube. Lift lower the fluid pressure, move the connected syringe plunger, causing the bridge's sink section to pivot upward or downward. Thank you. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Myself Afifa Iram and she is my friend Tayyiba Tabassum. I am from class 9 standard. Our model name is burglar alarm. Burglar alarm is an electronic security device that detects unauthorized entry using sensor like IR or tripwires to detect the sensor. As usually powered by batteries and electricity. Key components: sensor detects the intruder, output device buzzer, LED LED. We use burglar alarm in our houses, apartments, retail stores and jewelry shops, etc. to detect the thieves. When the light falls on opaque body with the help of sensor, we detect the thieves. So we can detect the thieves or burglar alarm. Thank you for listening. Good morning, I am Umar studying in class 9. I am going to explain you how water sphere work. Daniel Bernoulli was a Swiss mathematician and physicist. Here the Bernoulli's principle states that as the speed of a moving fluid increases, its pressure decreases. The sphere creates a fast moving stream of air over a tube leading to the water container. According to Bernoulli, this high speed flow results in lower pressure at the top of the tube. The higher atmospheric pressure on the water surface in the bottle pushes the liquid up to the tube into the low pressure stream, where it broken into fine droplet and spray the water. Uses in the spray bottle and atomizer, the same principle is used to spray the water or any other liquid. Good morning everyone, my name is Mohammad Isra Ahmad. I am the student of class 9th. Here I have assembled a very small of water filtration plant to explain you water will get filtered. Here I have taken 4 tumblers where I have inserted the different things to filter the water. I will explain you about it one by one. In first tumbler I have taken pebbles, traps, large debris, leaves and bugs. In second tumbler I have used sand which filter out the smaller and insoluble particles. In third I have used charcoal which absorb organic and impurities
and odors. In fourth tumbler, we use the cotton, which primarily has mechanical pre-filter, making water clearer, producing turbidity, production and sensitive carbon or RO membranes from clogging and damage. So you can see in fifth tumbler we got a clear and clean water. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Arshia from class 8th division of science, the floating egg. Here we are showing the density and buoyancy that in egg sinks in fresh water but floats in salt water because adding salt increase the water density to be greater than the egg's density, the amount of stuff mass in a given space volume object since if there are less than the egg. So, thank you.